फाइनल फैंटेसी 16 की लाइव स्ट्रीम में। तो भाई साहब बात यह है कि ये 13th स्ट्रीम है इस गेम की, और 12 की 12 स्ट्रीम जो रही है ना भाई अभी तक की, बहुत ज़्यादा धांसू रही है और सारी प्लेलिस्ट में है। और लास्ट स्ट्रीम में हमने देखा कि हमारी फाइट हुई बहामत के साथ। बहामत मतलब एक इतना खतरनाक ड्रैगन था भाई, और ऐसी फाइट हुई ना ब्रो, लेजेंडरी फाइट कहूँगा मैं इसको। बहुत तगड़ी फाइट हुई बेसिकली, मतलब जितने मतलब मुंह खुले खुले रह गए भाई, ऐसी नेक्स्ट लेवल फाइट थी। मतलब ऐसी फाइट मैंने किसी गेम में नहीं देखी। मैंने बहुत सारे गेम खेले हैं, गॉड ऑफ वॉर भी खेला है, सब खेले हैं। लोग कहते हैं कि बहुत तगड़ी फाइट होती, लेकिन भाई जो लास्ट स्ट्रीम की फाइट थी ना, सीरियसली ब्रो, बहामत के साथ बहुत ज़्यादा तगड़ी थी वो। तो वो देख लेना। तो लास्ट हमने जो स्ट्रीम करी थी तो उसमें बेसिकली हमने बहामत को मार गिराया, और भाई हमारा मदर क्रिस्टल जो था वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया चौथा। तो ऑलमोस्ट सारे मदर क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उसके बाद एक स्ट्रेंज क्रीचर अल्टीमा दोबारा आया हमारे सामने, और इस बार वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहा है भाई। और ओडिन को भी उसने अपने कैप्चर में ले रखा है। अब शायद मुझे लगता है कि आज हमारी फाइट ओडिन के साथ हो सकती है। तो ठीक है, शेयर कर देते हैं भाई स्ट्रीम को, आ गए हैं तो। लेकिन सीरियसली मैन, व्हाट अ फाइट यार, व्हाट अ फाइट। मतलब मैं सीरियसली, मतलब मैं तो पागल हो गया था भाई। ओके तो भैया शेयर कर दिया है, करते हैं कंटिन्यू। ओडिन को तो ऑलरेडी कैप्चर में लेके रखा है भाई, तो अपने को जाना है हाइड आउट। तो अभी हमने चौथा मदर क्रिस्टल भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, और मामला हो गया बहुत ज़्यादा घातक। मतलब कैसी फाइट थी भाई लास्ट वाली, और फिनिक्स और इफ्रित कंबाइन हो गए भाई, सुपर सेयन टाइप का ड्रैगन बॉल दी वाली फीलिंग आ रही थी भाई मुझे तो, मतलब बहुत डेंजरस। तो वापस आ चुके हैं हम हाइड आउट में, सारा बवाल करके, बहुत लोगों को मार के, और काफी खतरनाक ड्रैगन से फाइट करके। Asleep since I returned from the Dominion. Tyre says he should be back on his feet soon enough. For a while, at least. She discovered something on his chest. A swelling, circled in stone. The curse. हेलो सौरभ मेरे भाई, कैसा तू ब्रो? समझ गया ना, वो कर देना भाई जो मैंने तुझसे बोला था। Another rises up to greet us, doesn't it? It's never ending. Even the sky seems to have grown tired of it all. ओके तो वापस आ गए अपने हाइड आउट पे हम। बिल्कुल यार ब्रो, कर देना भाई। कल बल्लू भाई से ही मेरी बात हुई थी, तो हम यही बात कर रहे थे। पावर ऑफ लाइट मिल चुकी है मुझे, क्योंकि हमने जो बहामत था ना उसकी पावर भी एब्जॉर्ब कर ली थी भाई। ओ मैन, Tyre won't be happy if I disturb Joshua. While he rests, I might as well see what Otter has to say. Did you see the pair that got hold of? तो भाई हमने बहुत तगड़ी फाइट करी है, तो अपने पास ना अभी अपडेट्स तो काफ़ी आ जाने चाहिए भाई। तो पहले मैं देखूंगा कि अपने पास क्या अपडेट आई है।
बहुत ज़रूरी है भाई अपडेट रखना खुद को। और इसको हटा के मैं बहामत की पावर रखूँगा। थोड़े चेंजेस करते हैं अपनी एबिलिटीज़ में। बहामत की भी चैनल्ड हो चुकी है भाई एबिलिटीज़। ओह, एबिलिटी पॉइंट काफ़ी हो गए हमारे। ओके, एरियल ब्लास्ट। ओ भाई, ये बहुत तगड़ी पावर लग रही है यार। मैंने थोड़ा सा स्किल पॉइंट वेस्ट कर दिया भाई, लग रहा है मुझे। एक सेकेंड, इसको रीसेट करेंगे हम। क्योंकि ये गरुड़ा की जो पावर है ना भाई, ये बहुत नेक्स्ट लेवल शिट है ब्रो। ओके, ठीक है। अबे ये कैसे चेंज होगा भाई? ओके, राइजिंग फ्लेम। राइजिंग फ्लेम की जगह पे हम यूज़ करेंगे फ्लेम्स ऑफ रीबर्थ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल शिट है। इसको तो हम रखेंगे भाई। इसकी जगह पे भाई ये यूज़ करेंगे भाई। ये तो ब्रो, ये नेक्स्ट लेवल बहुत तगड़ी लग रही है एबिलिटी मुझे तो। ठीक है भाई, क्योंकि हमारी फाइट हुई है, हमें बहुत चीज़ें मिली है, तो भाई अपने को थोड़ा अपग्रेड कर लेना चाहिए, क्योंकि ओडिन से लड़ने के लिए ना भाई। क्योंकि ओडिन ना बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगा ब्रो हमें। ओ भाई, काफ़ी तगड़ी सी तलवार है भाई अपने No पास इस बार। scratches, right? बहुत बढ़िया। Should last you a good while. No scratches, right? Don't waste my time. You ain't got the stuff. ठीक है भाई, ये अपग्रेड कर लिया भाई से। और मैडम से हम थोड़ा कुछ सामान भी खरीद लेते हैं भाई। It's a dangerous world out there. अब ज़्यादा बकवास मत कर, सीधे सामान दे ब्रो। ओ भाई, नहीं, ये इतना पावरफुल नहीं है। पोशन वगैरह ले लिया जाए। पोशन फुल है भाई। You'll not find a better price than that.
It's rubbing me blind, you know. ठीक है, टाइम टू गेट बैक। ओटो से मिलने चलते हैं भाई। Will we ever see the sun again? Did you see that? Tell me you saw it. चल भाई ओटो। Otto, how fares the realm? The realm? Oh, she's just fine. As long as you look past the fat storms. तो लास्ट स्ट्रीम जो थी ना ब्रो, वो अभी भी मेरे दिमाग से नहीं निकली है भाई। उसमें जो फाइट थी ना ब्रो, और जो प्लॉट था भाई, भाई बहुत तगड़ा गेम है ब्रो। फाइनल फैंटेसी 16 इज अ नेक्स्ट लेवल गेम। जो भी अगर जिसने नहीं खेला, मैं तो रिकमेंड करूंगा भाई, खेल लेना इस गेम को। बहुत टाइम बाद ऐसे गेम बनते हैं। Well, that depends on your definition of good. All right, fine. What do you suggest we do? Oh, no, I'm just a messenger. I'll leave the scheming to those more suited to the task. Could be that Lady Vivian and Old Tomes have their own thoughts on the current state of things. Could be that they don't. It certainly can't hurt to ask. I suppose not. Okay. Vivian. How is it that every one of your little excursions presages some inexplicable catastrophe? Not that you are to blame for the Dominion's fate. No one could have predicted. I'm sorry I couldn't save your... My countrymen are stronger than you think. A few toppled clock towers won't break their spirits. They'll be... I hope so. Look at us. Bluer than a pair of bog crabs. Tempting though it may be, You believe there's one to be found? I don't know. But I am... Okay, अब सुनते हैं इसकी बात। Beneath these darkened skies, fear and confusion reign over Valisthea. Oh, the lands around the fallen mother crystals had already begun to wilt for want of ether. But not like this. Crystals that filled wells and fueled furnaces. Now nothing but pretty shards of rock. And those that hang from the people's necks cast nary a glimmer of light to keep the dark at bay. It is only a matter of time before the common folk convince themselves that the end of days is upon us. Yet I fear a swift end is more than we can hope for. While most of the world thirsts for ether, the remainder drowns in it, spawning Akashic in droves. And amidst the hordes of mindless beasts, with magics as like to fail as function, even the strongest nation would falter. Rosaria and the Iron Kingdom teeter on the brink of collapse, while the tragedy in Twinside has all but paralyzed the Holy Empire. Dalmekia fares little better. Rumor has it the ministers fled the capital after the fall of Drake's Fan, leaving their beloved republic to crumble. Waloed, meanwhile, moves in earnest. The Einherjar has been sighted off storm. The world, in short, is in chaos. It would seem our civilization was nothing but a castle of sand, to be washed away at the whim of the waves. तो भैया बात यह है कि हमने मदर क्रिस्टल को जब डिस्ट्रॉय कर दिए हैं चारों मेन, तो जो पावर मिलती थी क्रिस्टल को खत्म हो चुकी है। अब लोग बेसिकली मैजिक यूज नहीं कर पाएंगे वर्ल्ड में। The reports I've received are considerably more blunt in their appraisal. Without the protection of their nations, it will fall to the people to defend themselves against those who would take what is theirs. Which is only ever going to end one way. Defending a farmhouse against a band of chocobo thieves is one thing, but pitchforks and palisades will do little to stall an army's advance. Should the King of Waloed deign to invade, there would be none to stop him. None but us. ओके, हाइपोक्रेट से मिलते हैं। मे बी अल्टीमा के बारे में इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन अब आ गई हो,
क्योंकि अल्टीमा जो है ना भाई बहुत स्ट्रेंज और बहुत पावरफुल क्रीचर है। अगर उससे हमारी फाइट होगी ना ब्रो, बहुत धांसू होगी, बहुत ज्यादा धांसू। Is a storm coming, Sid? Let me guess. You're here about the skies. Is there anything you don't know, Lawsman? It doesn't take a court astrologer to augur the obvious. As for what has disturbed the heavens, that, I believe, is a question the Fallen might be better placed to answer than I. And on the 6th day did the gods tear the sun from the firmament, visiting darkness upon... But I dare say you remember your childhood lessons. You think they're connected? But Ultima was one of the gods responsible. Well, he has certainly exhibited powers that we mortals would associate with the divine. There is nothing divine about him. But he wouldn't be the first god of whom that could be said, now would he? Yet for all the fairy tales that tell of the sins, there is almost nothing in the way of actual historical accounts. Had I the Journal of Moss the Chronicler, I may have been able to tell you more, but alas, I fear all remaining copies have been lost to time. You will forgive me, I hope? Certainly not. Because there is nothing to forgive. Even without this journal, you've provided us ample wisdom. And we will all... तो ये अभी भी नहीं बता पाया भाई अल्टीमा कौन है, ये किस टाइप का भाई एस्ट्रोलॉजर रखा हमने। किसी काम का नहीं है भाई चचा। Clive, we have a problem. Only one. That would be a first. It would. Actually, there are three. We had as many owls arrive while you were at the shelves. Martha's got a cashier at her gates, and talk of monsters roaming the hills outside of Northreach has put the wind up Isabel and her lot. And don't forget Dalimil. Lubor says the village was raided by bandits. When it rains... It fucking pours. The curse breakers are spread thin, taking stock of the damage in the Dominion. And even if I could get word to all of them, I doubt they'd get here in time to make it, which means there's only two people who can. Let them know we're on our way. ओके तो कुछ प्रॉब्लम आई है क्योंकि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं हमारी फाइट के बाद से भाई। बहुत कुछ बदल चुका है और लोग ज़्यादा चौड़े बन गए भाई। तो अपने को पहले इन सब की मदद करनी है भाई। चलो पहले यहाँ चलते हैं डेलिमी इन इस डेजर्ट में। Sid, your new companion appears much more formidable than your uncle. Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalimil has a bandit problem. Indeed. Although... ठीक है भाई, बैंडेड प्रॉब्लम है, सीधे बता, खत्म करते हैं भाई। Oh man. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalimil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the Desert Hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. ठीक है भाई, छोटे मोटे मुझे पता है, अब थोड़े बहुत फुद्दू से क्वेस्ट होंगे ओडिन से लड़ाई से पहले। ओ भाई
You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood. It's we hire mercenaries. And what we're better. And come. मतलब ये जो क्वेस्ट हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, ये गेम से इतना रिलेटेड नहीं रहेंगे, मिलेंगे, मतलब जो मुझे लग रहा है। खाली निपटाओ और अगली फाइट का वेट करो भाई। विक्टर Sid and Lady. Oh, God. Where's that? So, you see my point? What would Sid the out? Well, he'd let them choose. What? It may. Before presenting them and to it. Absolutely. ठीक है, मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ इन साइड क्वेस्ट में, मतलब एक टाइप के साइड क्वेस्ट ही है ये मेरे हिसाब से, तो मैं ज़्यादा इनके कन्वर्सेशन पे इंटरेस्ट नहीं लूँगा और सीधे भाई इसको निपटा के मेन अपना जो है ना भाई ओडिन के साथ, और वो जो मेन चीज़ें चल रही हैं वर्ल्ड में उन पे फोकस करेंगे हम। अबे ठीक है बे। Then let us band together and show these brutes that Dalimil is not to be trifled with. तो कुछ भसड़ मची हुई है लग रहा मुझे। My shop. If I had my pickaxe, I would. I mean, it may still be possible to buy something. अबे इससे मैं 5वीं बार बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा, तो मर्सनरीज हायर करने थे, आई थिंक उसके लिए हम भेज बदल के आए हैं ताकि इसके घर की रक्षा कर सकें। ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे, जल्दी निपटाना भाई ये। Thank you, Clutch. भाई तलवार देख रहे हो? I don't know. Conrad seemed quite taken with you. Mummy, I'm scared. I'm ruined. Good news. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully with The rest, my friend, this estate. तो प्रोटेक्ट करना है आई गेस। आ गए भैया, बैंडेड्स आ गए फाइनली। He's all yours. Oh man.
भाई लाइटनिंग की पावर बहुत ज्यादा जबरदस्त है भाई ये बहामत की, सीरियसली मैन। Seriously, man. बेसिकली मैं अभी बहामत की पावर भी सीखना जा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो भाई बहामत की पावर सीखने के चक्कर में मेरी मौत ना हो जाए भाई यहाँ पे, क्योंकि मुझे रामूस की पावर की इतनी आदत सी हो गई ना भाई। ठीक है, अच्छा लगा भाई, पावर अच्छी है बहामत की भी। The townspeople. Could they have held out? I don't hear any fighting. Then we should hurry. Natalie. अबे ठीक है भाई, जल्दी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करो भाई। Conrad seems to have had a change of ठीक heart. है, इनकी तो चलते रहेगी छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव। डिनर करते हैं, फिर वापस आते हैं और ओडिन से लड़ने जाते हैं, क्योंकि कुछ छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव अपने को निपटाने पड़ेंगे, क्या करें, मजबूर हैं भाई। तो डिनर के बाद करते हैं कंटिन्यू। Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Come now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment.
ओके, तो हम आ गए वापस डिनर करके। तो भाई साहब, एक ऑब्जेक्टिव हमने पूरा कर दिया है, क्योंकि मदर क्रिस्टल के डिस्ट्रॉय होने के बाद वर्ल्ड में कुछ चेंजेस आए हैं, तो इधर उधर बवाल हो रहे हैं छोटे मोटे, जिनको फिक्स करने हम जा रहे हैं। एक फिक्स कर दिया, दो बवाल और बचे हैं, दो जगहों पे और जाना है अपने को। एक तो मार्थास के वहाँ भी जाना है। ठीक है, थिंग्स फॉल्स अपार्ट। अब चलते हैं यहाँ पे मार्थास रेस्ट पे। मार्था के वहाँ भी कुछ बवाल चल रहा है भाई। मुझे लगा था ओडिन से हमारी लड़ाई आज होगी, लेकिन मुझे लग रहा है जिस हिसाब से फुद्दू ऑब्जेक्टिव मुझे दिख रहे हैं भाई, आज में भी हो सकता है वो लड़ाई ना हो। It's good to see you. And you, Clive. Jill? Otto said you'd been attacked by a Akashic. What exactly happened here? Those skies are what happened. Not long after they fell dark, we had our first visit. There were hundreds of them. Tried to storm the hill. Only a handful rest are still. What do you think, Clive? That we join the fight. I thought you'd never offer. तो क्रीचर्स आ रहे हैं, ये कह रही है कि स्काई से, तो ये भी शायद मदर क्रिस्टल के डिस्ट्रॉय होने का एक नतीजा लग रहा है मुझे। Do you think there are as many as Martha says? More. You don't think they've abandoned us, do you? Clive, wounded. ओके, We deal with the Akashic first. तो ये है क्रीचर। लाइटनिंग वाली पावर अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है भाई। एक ही में सब निपट गए भाई। प्रो, ये पावर बहुत ज्यादा डेडली है भाई, लेकिन रिफिल होने में टाइम लग रहा है इस पावर को। If you've come to rob this place, You are mistaken, my Lord Rosfield. We're here by Madame Martha's leave. how do you know my name? Forgive me, my lord. There wasn't time for introductions. We're with the Guardians of the Flame. Wait, men. But how did you come to be here? Where is your commander? So wait. Take my... And to think you took them. They were. Martha! Trouble! The scouting party's almost at the lift.
ठीक है, फिर से आ गए कुछ मॉन्स्टर भाई। चलो फिर से निपटाते हैं भाई। दोस्ती भी निभानी जरूरी है भाई, क्या करें। Mad dogs. Squire, I need you to get those who can still walk up the lift to Martha's. But what about... So Wade, Lord Rossfield? Oh, ठीक है भाई। behind you! Oh man. Damn it! We need to get the injured to safety. Do you think we can hold them off? are you with us, Sir Wade? Always. Then let's... कछुआ यार, सीरियसली ब्रो। साले कछुए भी ऐसे हो गए भाई। इसके कवच पे नहीं लग रही भाई बिल्कुल भी। ये पावर बहुत ज़्यादा धांसू है भाई, बहुत ज़्यादा धांसू पावर है। देख रहे हो इसे? कछुए वो तो स्लो हुआ करता था भाई।
विद फुकार मारता हूँ इसे मैं। बस निबट जाएगा अभी। ठीक है भाई, ये भी निबट गया। Is anyone hurt? I don't think so. ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम। I see you're look out, source. Oh, Jill and I will make for East Pool. ओके, अभी भी हमें दूसरी साइड पे जाके बचाना है भाई। बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं भाई ये, क्योंकि मेन फाइट जो ओडिन के साथ फाइट है ना भाई, क्योंकि ओडिन को तो कैप्चर कर दिया भाई अल्टीमा ने, पूरा ब्रेन वॉश हो चुका है वो। ओ भाई, गॉब्लिन्स ने अटैक कर दिया ब्रो। We have to slow them down. Martha and the others won't be ready. टाइफून ही मारना पड़ेगा इनको, लग रहा है अपना। सीरियसली भाई, एक ही शॉट में सारे के सारे किल। अबे चोकोबो, उसको क्या हो गया भाई? ये जो हमने मदर क्रिस्टल डिस्ट्रॉय किया ना, तो इनके ऊपर भी उसका ईथर का असर हुआ है। इस वजह से ये बहुत क्रीचर अजीब अजीब सब बिहेव करने लगे हैं भाई। ये चोकोबो शांत जानवर है भाई, ये कभी नहीं लड़ता। ओ मैन, ये तो बहुत गंदा क्रीचर है भाई, एक आंख वाला। Did I miss anything? Only the first round to wait. Shall we? ये सबसे तगड़ी पावर लगी मुझे, सबसे ज्यादा तगड़ी पावर है भाई ये। गरुड़ा की पावर जो हमने अब्सॉर्ब करी थी ना, उसका नतीजा भाई है।
ये सीरियसली इसकी पावर को मैं अपग्रेड जरूर करूंगा भाई। जो बहामत की पावर हमने अब्सॉर्ब करी थी लाइटनिंग वाली ब्रो, बहुत ज्यादा पावरफुल है वो भी। पेल लिया भाई इसे तुमने, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं भाई हम। कुछ भी नहीं है भाई, निपटा दिया है। ठीक है भाई, एटलीस्ट अब तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाए कंप्लीट। But it won't be long before the... ठीक है, मार्थास से विदा लेने का वक्त आ चुका है आई थिंक, क्योंकि अगर अभी विदा नहीं लिया तो भाई अभी एक और टास्क करना अपने को। हाँ ठीक है, तो बेसिकली बात यह है कि ये जो क्रीचर्स है ना, ये पागल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमने मदर क्रिस्टल जब डिस्ट्रॉय करा तो कुछ तो इनके ऊपर ईथर की वजह से ऐसा असर हुआ है कि भाई सब क्रेजी हो गए हैं और ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं भाई, अटैक करने लग रहे हैं। अरे यार, ये किससे मिलवा रहा भाई, नहीं मिलना अपने को यार। It is an honor to make you. Well, go on then. Yeah. If it please you, my Lord Marquis, might you take me as your squire? I would learn the duties of a shield from the finest. I'm sorry to disappoint you, Oscar, but I am a shield no longer. Nor was... But a squire. Would that really be so bad? You were a squire once. And I'm... पर ठीक है बे, ट्रिपल एच जैसा लग रहा भाई ये। ठीक है, ये भी हो गया। अब एक और जगह जाना है अपने को। नॉर्थ रीच, यहाँ भी कुछ बवाल चल रहा है भाई, इनको भी बचाना भाई, सबका ठेका ले रखा हमने। First we find Isabel. Heard a bloke saying he saw ghosts on the far side of the wall. I saw it with my own eyes. I can't do it. Lord. We were there. With the... Four left for more in the captain's orders. साला दुनिया को बचाने के चक्कर में ऐसा लग रहा है अपना काम बढ़ा दिया भाई इन लोगों ने। Madame, please! Half the garrison's been slaughtered. This not. I'll have a word with him. अबे ठीक है बे। It was a noble effort, but ओके, यहाँ भी कुछ क्रीचर अटैक कर रहे हैं भाई। तो इन पे अटैक करा उन क्रीचर्स ने। Creatures? They came out of nowhere. They went for Josie first, then me, and then they were just gone. Do you remember where you were? On the road from Oriflamme. We just...
At least we have an idea of where the thralls might be now. We should head for more. I assume you have a plan? It was all they could do to escape. This looks absolutely beautiful. बहुत ब्यूटीफुल ब्रो. ओ भाई, ये एनिमीज यहाँ कैसे आ गए खुले में? Save your strength. भाई शील्ड. ओ भाई, ये बहुत तगड़ा एनिमी है भाई. ये भी यहाँ कैसे आ गया भाई? ये सब तो मदर क्रिस्टल के बगल में मिलते थे मुझे.
shit. अबे निपट गया यार। मैं सोच रहा था इसको फ्लेम मोड में मार के थोड़ा ब्लड रिकवर कर लेता मैं। भाई बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन पावर है भाई ये टाइफून, सॉरी गरुड़ा वाली पावर तो भाई नेक्स्ट लेवल है। और ये क्रीचर बेसिकली अब सीधे अर्थ पे आने लगे हैं भाई। You have the town. Oh, is the... It's not me. Now. Lest you wonder, Okay. I'm foolish enough to believe that this has solved all of my problems. But it has solved one. चलो थैंक गॉड ये हल्के में निपट गया भाई। Our friends seem to have things under control. For now, at least. Let's go and put Otto's mind at rest. चलो भैया हाइड वे में वापस जाके ऑटो से बात करनी है अब। जरा सुने भाई ऑटो भाई क्या कहना चाह रहा। व्हाट्स ऑटो हैज फॉर अस। Was wondering when you turn up at ours from all our friends thanking you. How is it you always met luck? I suppose any word on the rest? Let's see. Storm's still crying out for mother crystals. The nations are still in chaos. And the skies are still the colour of a kick in the kidneys 2 days on. So, Right. Clive, we knew this was going to happen. Well, not the bleeding skies part, but you take my point. Now's not the time to second guess yourself. Now's the time to visit the infirmary. Taya says your brother's away. ओके जोशुआ को होश आ गया है। तो जोशुआ से मिलके हमें बहुत चीज़ें क्लियर होने वाली है भाई, क्योंकि वो अल्टीमा के बारे में बहुत कुछ जानता है जो हम नहीं जानते। So it was not Sylvester, but Olivier who served as Ultima's puppet. And when Dion learned of this, he sought to slay the fiend. Only for his father to take the spear that would have freed him. Enough to drive a man to madness. Small wonder he hasn't stirred. I would be afraid to wake. Had I but reached out to him sooner, warned him of the threat Ultima posed. But now, both an empire and her prince lie broken. Joshua, what do you know of Ultima? Very little, I'm afraid. Despite my best efforts. 18 years ago, as I lay buried beneath the rubble of Phoenix Gate, 'twas not death who came for me, but another. And it was while in my rescuer's care, I first heard of Ultima. I've been chasing his shadow ever since. Ultima is driven by some deep, dark purpose, and for whatever reason, it would seem you are crucial to his designs. He will stop at nothing to have you, even if that means toppling an empire. But why me? What possible use could I be to such a creature? That is one of many answers that have eluded me. Yet, I am certain of this. It is not mere chance. You were chosen for a reason. All dominants carry within them the might of an icon. Nigh limitless power that is at once acutely limited. I wield fire, and only fire.
And I only ice. 8 wardens for 8 elements. But you, Clive. You are different. You're special. Your abilities begin with the flames of Ifrit. But they do not end there. The fact Ifrit can even exist goes against everything we thought we knew of dominance. Perhaps Ultima has been waiting for one such as you, whose potential is truly limitless. I've encountered that thing several times now. If it or he, as you say, needs me, why hasn't he claimed me as he did the boy? Were I to hazard a guess, I'd say the two of you are somehow incompatible. His mind not properly attuned to your body. His mind. Mind, awareness, spirit, call it what you wish. But I believe Ultima to be an embodiment of the concept. Is why I struggle and fail to contain him here inside me. Sorry, inside you. With every setting sun, I feel my strength wane. And though the Phoenix's flames mend the prison I have made for Ultima, they do so at a cost. We must find a means to bring an end to him before I meet my own. What were you thinking? It was that or let him take Clive. And I've always had a soft spot for my brother. But that doesn't mean you should sacrifice yourself to save me. तो भाई अल्टीमा को चाहिए क्लाइव की बॉडी, बिकॉज क्लाइव एक ऐसा इंसान है जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंटल पावर नहीं, जब बल्कि वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंटल पावर पोजेस करता है भाई। मैन, क्योंकि गरुड़ा की पावर भी हमने खींच ली और 2-3 पावर है और अपने पास लाइटनिंग है, रामोस की पावर है, फेनिक्स की पावर है भाई। Well, what's the short of it? I told you. The capital of the Free Cities is under siege by an army of monstrosities. The city guard are doing their best to stem the tide, but numbers ain't on their side. What of Lord Byron and Mid? Were they able to escape? No, but they're all right for now. They're hiding with Gav at midship. ओके, तो कुछ जो फ्री सिटीज थी भाई उन पे अटैक कर दिया एक बड़ी आर्मी ने, ऐसा बोल रहा है ये, जो कि बहुत घातक चल रहा है भाई। ये तो बवाल कर देंगे। What's the swiftest route to the Free Cities? That sounds like a question for the map. Look here. This road, through Tabor, should provide the least trouble. Good. What a coincidence. Tabor is exactly where I'm bound. Joshua, Bed is where you should be bound. तो जोशुआ भी जाना चाहता है ब्रो। अब मुझे लगता है कि भाई वहाँ ओडिन मिल सकता है अपने को। I would surely have been inclined to agree. But thanks to administrations, I feel I may safely rejoin my attendant, who was to wait for me in Tabor if we became separated. All right, we travel together. Clive. If he stays close to me, he'll be fine. Thank you, brother. I'll look after him. तो अपने को फ्री सिटीज में जाना है, क्योंकि बात यह है वहाँ अटैक कर दिया मॉन्स्टर्स ने। क्योंकि जब से मदर क्रिस्टल तबाह हुए हैं तब से मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं भाई। ये कौन सी जगह है भाई?
It's like a dream. The four of us out walking like we used to. Enjoying this, are you? Gavin, the others could be in danger. You're right. Sorry. Yoto is a fine scout. The candle was attacked. She will already have the best out of information. Tabor isn't far. We should pick up the pace. ये छोटे मोटे कुत्तों की संख्या अचानक से बढ़ गई है भाई। एक ही बारी में तबाह कर दे रहा भाई ये वाली पावर जो है ना इसकी, जो नई पावर अनलॉक हुई है बेसिकली। We can use the ruins to cross the ravine. Assuming they would allow it, the echoes have a will of their own. ओके, मुझे पता था भाई ये जागेंगे अचानक से। अबे नीचे कहाँ जाऊँ मैं? Tell us about Yote, Joshua. She's strong-willed, loyal, and deadly with a blade. Much like Clive, but with better manners. मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर हो गए भाई। Another ether flood. They're everywhere now. We can't go around it. तो ये ईथर फ्लड है ना, इन्हीं की वजह से हम पे अटैक कर रहे हैं भाई। पागल हो गए हैं मॉन्स्टर सारे।
nearly there. Have you been to Tabor before? There are a few places I haven't. Where now, Joshua? There is a residence just inside the city gates. She awaits us within. Make for Tabor, okay. My Lord Marquis, it is an honor. I am Marcus? Yote, Knight of the Undying, charged with the protection of His Grace Joshua Rosfield, Keeper of the Flame of the Phoenix. Of course. It all makes sense now. Would you care to elaborate? The Undying are loyal servants to the ducal throne. Or more specifically, to its heir. They have served our family for generations, albeit from the shadows. Since their inception, they have been tasked with the preservation and enactment of the rites of ancestral communion. After the events at Phoenix Gate, it was the Undying who delivered me to safety. And since the day I left Rosaria, Yote has been my constant companion and protector. Without her sword, I would not have survived my journey across the realm. तो इसी की वजह से भाई जोशुआ बचा अभी तक, योते की वजह से। योते You saved my brother. I owe you a debt I can never repay. I but did my duty. Come now. Tell us what you've discovered. Your Grace, it is as you feared. The vessel we spied off the coast of the Crystalline Dominion on the night of her fall. It was the Einherjar. Beyond any doubt. The Black Galleon. Joshua, the Einherjar is the Royalist flagship. What business would they have in the Dominion? Upon learning of Waloed's involvement in recent events at Drake's Fang, I sensed the malign influence of Ultima, and bid Yote and the Undying look into the matter. We have reason to believe that the Black Galleon weighed anchor shortly after the fighting began, and set a course due south. For Canva. Then it is Waloedanites who besiege the cities. What is left of them? Yes. And the Black Galleon sails at but one man's behest. Barnabas Tharm. Barnabas Tharms. I think Odin. Cities of Canva की मीटिंग चल रही है भाई। The city guard have been paid, if that's what you're implying. ये अलग टेंशन में चल रहे हैं क्योंकि इन पे हुआ अटैक मॉन्स्टर्स का। Well, you are free to leave, Lord Minister. Markets abandoned, warehouses aflame, blackened hulls choking every port in the capital. Canva is ruined. The realm teeters on the brink of chaos, and all you can think about is commerce. Forgive us. We were not aware Dalmekia now subsisted on charity.
How dare you? Distinguished members of the council, you must forgive His Majesty this intrusion. What is the meaning of this? A trifle crowded, but I fear it will have to serve, my liege. Very well. My colleagues, do you not see? The king! He has come to save us from the Akashi! He is a gift from the heavens, divine intervention, our very salvation. And of course, if it is compensation he requires, we would be most willing to negotiate a fair price for services rendered. Fools! Your ignorance unbecomes you. Your Majesty, correct me if I'm wrong, but I would swear that the fiends washing the cobbles of Canva with the blood of her citizens wear the colors of Walud. Ha! So you do not deny it. Guards, fetter them, and see our guests to the dungeons! Enough. Pathetic creatures. That you should imagine yourselves worthy of salvation. The girl is still here, somewhere in the city, her consciousness fair dripping with her late father's hubris. A consciousness to which Mythos is inextricably bound and inexorably drawn. See that he is made welcome. Yes, Your Majesty. Come, Mythos. Surely the prince's light cannot have sated you. Oh man, सीरियसली ब्रो, ओडिन यहाँ पहुंच चुका है, तो मतलब भाई से पता है कि भाई क्लाइव एंड टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है. Based on what we know of Barnabas's actions, I would guess some few years, mayhap more. But to what end? What does Ultima want? The tapestry. तो बारनबस मतलब कि ओडिन, जिसका डोमिनेंट है ओडिन, उसके पास ओडिन ईकन है उसकी बॉडी में कैद. तो भाई वो जिसको अभी हमने देखा भाई, एक तलवार में उसने सबको निपटा दिया भाई. तो उसे पता चल चुका है यहाँ पे है और वो अल्टीमा के कंट्रोल में है. Phoenix Gate, Drake's Breath, and now here. But what is it? It is old, ancient, even. Naught remains of the faith it represents, save what can be gleaned from the image itself. None could tell me what the one in the apothecary meant, even the Undying. But I believe it may be the key to discerning Ultima's purpose. That figure in the center, the one beneath whom the icons congregate, that I believe to be Ultima. He is a god, or at least godlike. His very existence beyond our ken. The icons, and by extension their dominance, are meant to be his subjects, and while some, like Barnabas, have accepted this role, others have rejected it, like you, Clive, which is rather inconvenient, as it appears he needs you most of all. And gods don't like to be disobeyed. No, I don't suppose they do.
Clive, may I tell Yote of the lake? By all means. Yote, I will be accompanying my brother to the Free Cities. Whilst we are afield, I would have you watch over those Clive has made his wards. Omielos Delan to his Bilith. Though well concealed, the hideaway lacks trained fighters to defend its occupants should they be discovered. But it is my duty to... As it has ever been my brother's duty, remember. If that is your wish, Your Grace. But please be safe. If aught were to befall you, You have my word. Farewell, my lord, my lady. ओके, तो जोशुआ ने इसको बोल दिया कि भाई जहाँ हाइड आउट है वहाँ चली जाए, क्योंकि अब लड़ाई हम तीनों की है। क्योंकि यार इसका कोई काम भी नहीं है, खाली ऐसा ना हो कि ये लपेटे में आ गई भाई, एक आध तलवार हो गया ना। लेकिन भाई बारनाबस यानी कि ओडिन भाई, उसके साथ जो फाइट होगी ना ब्रो, वो तो नेक्स्ट लेवल होगी। लेकिन जो अल्टीमा के साथ अगर हमारी फाइट होगी, ये क्रीचर अगर ये अल्टीमा है एंशिएंट क्रीचर, तो भाई बवाल हो जाएगा भाई। तो ठीक है, तो हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं ओडिन के, और नेक्स्ट स्ट्रीम में आई एम श्योर ओडिन और क्लाइव की भिड़ंत होनी फिक्स है भाई। तब तक के लिए एंजॉय करिए और दिल थाम के बैठिए, क्योंकि नेक्स्ट लेवल शिट होने वाली है भाई, नेक्स्ट लेवल।